हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कोलीज फ्रैक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इन क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स। कोलीज फ्रैक्चर जो है वो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस पे होता है एट इट्स कॉर्टिको-कैंसलस जंक्शन सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस। 40 प्लस एज में कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्चर है, मोस्ट कॉमन इन वुमेन बिकॉज ऑफ द पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। कॉज क्या होता है? इट इज यूजुअली कॉज्ड फ्रॉम अ फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। रेलिवेंट एनाटमी, जो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है वो कार्पल बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करता है टू फॉर्म अ रेडियो कार्पल जॉइंट। डिस्टल एंड ऑफ अल्ना है वो रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करता है टू फॉर्म रेडियो अल्नर जॉइंट। नॉर्मली जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ रेडियस है इट faces ventrally and medially. This direction is very important क्योंकि कुलीज फ्रैक्चर में इसका डिसलोकेशन होता है। The tip of radial styloid is about 1 centimeter distal to the tip of ulnar styloid. ये ulnar styloid है और ये रेडियल स्टिलॉइड है। सो यू कैन सी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर का है। मतलब जो रेडियल स्टिलॉइड है वो अल्नर स्टिलॉइड से 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है, डिस्टल है। तो ये जो डिफरेंस है ये भी हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है। पैथो एनाटमी की बात करेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आर आ गया है बट इट इज़ अ पैथो एनाटमी। पैथो एनाटमी में जो फ्रैक्चर लाइन है दैट रन्स ट्रांसवर्सली एट कॉर्टिको-कैंसलस जंक्शन। मोस्ट कॉमनली डिस्प्लेसमेंट्स हमको कुलीज फ्रैक्चर में देखने को मिलते हैं वो है इम्पैक्शन ऑफ फ्रेगमेंट्स, डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट, डॉर्सल टिल्ट, lateral displacement, lateral tilt, supination. मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 1 या मोर डिस्प्लेसमेंट मे बी फाउंड, लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि देयर मे बी ओनली अ क्रैक फ्रैक्चर विदाउट अ डिस्प्लेसमेंट। लेट्स टॉकिंग अबाउट द डायग्नोसिस नाउ। क्लिनिकल फीचर क्या रहते हैं? पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ पेन, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी ऑफ रिस्ट। फ्रैक्चर है मतलब पेन होगा, स्वेलिंग होगा, डिफॉर्मिटी मिलती है, नर्व फोक डिफॉर्मिटी। यू कैन सी हियर जो हैंड का पोजीशन है वो ऐसा हो जाता है। दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी इज कॉल्ड एज डिनर फॉर्म डिफॉर्मिटी। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेडियल बोन ड्यू टू द फ्रैक्चर। ऑन एग्जामिनेशन टेंडरनेस रहेगा एंड irregularity of lower end of radius is found. जो रेडियल स्टिलॉइड प्रोसेस कम्स टू lie at the same level or higher level than the ulnar स्टिलॉइड प्रोसेस। जो रेडियल स्टिलॉइड प्रोसेस का लेवल है वो या तो सेम अल्नर स्टिलॉइड प्रोसेस के या तो सेम लेवल पे हो जाएगा या तो उससे हायर हो जाएगा। हमने क्या देखा था कि इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, लेकिन ये बराबर हो जाते हैं या तो फिर रेडियल स्टिलॉइड हायर हो जाता है। रेडियोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे। It is important to differentiate this fracture, Cooley's fracture, from other fractures at the same site like Smith fracture, Barton's fracture by looking at the displacements. Dorsal tilt जो होता है वो that is the most common characteristic displacement in the Cooley's fracture, which can be detected easily by looking at the direction of distal articular surface of the radius on the lateral x-ray. This is the lateral x-ray of the Cooley's fracture. Lateral tilt can be detected on the anterior posterior x-ray. Treatment of Cooley's fracture is essentially conservative होता है for undisplaced fracture. अगर undisplaced fracture है जिसमें जो broken end है वो displace नहीं हुआ है अपनी जगह से, तो in that case क्या करेंगे कि हम immobilize करेंगे hand को in the below elbow plaster cast for 6 weeks. 6 weeks के लिए immobilize करेंगे so that it can unite. Below elbow plaster cast, this is in the palmar flexion position and this is on the ulnar deviation position. डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर की बात करें तो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में पहले मैनिपुलेटिव रिडक्शन इज डन फॉलोड बाय इमोबिलाइजेशन। टेक्निक ऑफ क्लोज्ड मैनिपुलेशन क्या होता है? द मसल ऑफ फोरआर्म मस्ट बी रिलैक्स्ड ईदर बाय जनरल और रीजनल anesthesia.
Surgeon grasps the injured hand as in shaking hand position. The first step is to disimpact the fragment which have often been driven together. This is achieved by firm longitudinal traction to the hand against the counter traction by an assistant who grasps the arm above the flexed elbow. Some displacements are corrected by traction alone. The surgeon now presses the distal fragment into palmar flexion and ulnar deviation using thumb of his other hand. As this is done, the patient hand is drawn into pronation, palmar flexion, and ulnar deviation. A plaster cast is applied extending from below the elbow to metacarpal heads, maintaining the wrist in palmar flexion and ulnar deviation. This is Colle's cast. A X-ray is taken to check the success of close reduction. Beside displacement, it is important to look for correction of dorsal tilt, that is the distal articular surface of radius must face ventrally in normal cases. And patient is encouraged to move his finger as soon as the plaster dries. In addition, the shoulder and elbow joints are moved through their full range several times in the day. It is important to make check X-ray every week for the first 3 weeks in order to detect redisplacement, and the plaster is removed after 6 weeks, and joint mobilizing and muscle strengthening exercises started for the wrist and the fingers. Complications की बात करें, most patient progress rapidly to full functional recovery. Stiffness of joints, mostly of the fingers, are more common, and malunion is also common. Then subluxation of inferior and radioulnar joint. These are the some common complications that develop after the fracture. But occasionally, in some cases, there may be complications like carpal tunnel syndrome, pseudex osteodystrophy, and rupture of extensor pollicis longus tendon.